Okay, so now we will start with the concept of codominance. Now, as the name suggests, it is co and dominance means it is not कि कोई एक ही अलील एक्सप्रेस करेगा। जैसे कि मेंडल के फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस में, जो लॉ ऑफ डोमिनेंस था, लॉ इनहेरिटेंस के लॉज में, उसमें हमने देखा था कि इफ द प्लांट इज टॉल, और हाइट का कैरेक्टर अगर हम देख रहे हैं, और दूसरा जो प्लांट है जब वो क्रॉस हुआ विद द ड्वार्फ प्लांट, सो तो जो F1 जनरेशन आएगी इट वुड बी टॉल, एंड इन द F2 जनरेशन जब टॉल इसी वाले का कैपिटल टी स्मॉल टी हेट्रोजाइगस कंडीशन का जब हमने सेल्फिंग करी, सो व्हाइल गेटिंग द F2 वी आर गेटिंग 3:1 में टॉल इज टू ड्वार्फ एज अ फिनोटाइप। सो दैट मीन्स कि जो ऑफस्प्रिंग्स आते हैं उसमें या तो डोमिनेंट वाला F1 में डोमिनेंट एक्सप्रेस होता है और F2 में ये रेशियो रहता है डोमिनेंट इज टू रिसेसिव का। कभी भी दोनों साथ साथ एक्सप्रेस नहीं करते अकॉर्डिंग टू मेंडल। बट नाउ अंडर द हेडिंग ऑफ कोडोमिनेंस हम क्या देखेंगे कि जो ABO ब्लड ग्रुपिंग है, ABO ब्लड ग्रुपिंग, दैट मीन्स द ब्लड ग्रुप विच वी ह्यूमंस आर कैरिंग, तो इसके तो फिनोटाइप्स क्या क्या है? इसके फिनोटाइप्स वी नो कि सम ऑफ अस हैज ब्लड ग्रुप एज A, some of us has B, it can be O or it can be AB. Now, how is it decided? किसने डिसाइड किया? किसकी वजह से डिसाइड हुआ कि ब्लड ग्रुप A होगा, B होगा, O होगा या AB होगा? आओ देखें मैम कैसे ये पता चलता है। एलील्स डिसाइड हम्म, करते हैं। यस 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 यस। सो कैसे कैसे डिसाइड हुआ? नाउ लेट्स सी, आई विल एक्सप्लेन। What happens is we have genotype, means we have gene and also the alternative form. So कौन सा जीन होता है? It is I gene, जैसे कि मैंने अभी बताया कि if a cell is there then we have a nucleus and then we have chromosomes. So if I pull this chromosome out then we have फंक्शनल सेगमेंट ऑन DNA। तो उन फंक्शनल सेगमेंट में इसको हमने जीन बोल दिया। नाउ सपोज दिस इज आई जीन, सो आई जीन कम्स along with three different kinds of allele, three different alleles again in a population. So three different alleles are IA, then IB and then small I. So now कॉम्बिनेशंस क्या क्या हो सकते हैं, लेकिन एक इंडिविजुअल में। ये तो थे थ्री डिफरेंट अलील्स इन पॉपुलेशन, इन अ पॉपुलेशन। एंड every gene, we know that every genotype is responsible for some or the other protein formation, and then that protein formation helps in the determination of the phenotype. So that means when we consider a human being, एक किसी ह्यूमन बीइंग की इसकी बात करते हैं, एक छोटा सा बच्चा, इसकी बात करते हैं, इसके पास जो n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं, that has been that, that has come from mother, and another n number of chromosomes has come from father. So one set has come from mother जिसमें ये आई जीन का डील होगा, another set from father और उसमें भी आई जीन का एक अलील होगा। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं जीनोटाइप की, कि फादर से कौन कौन सा जीन आया होगा और मदर से कौन सा जीन या अलील आया होगा, वो देखते हैं। सो इट कैन बी कि इस बच्चे के पास यहाँ पे आई ए प्रेजेंट हो सकता है या आई ए यहाँ पर भी हो सकता है। सो जीनोटाइप कैन बी आई ए एंड आई ए, मीन्स फादर से भी आई ए आया, मदर से भी आई ए वाला अलील आया। ठीक है, और इट फिर तो कैन बी, इसके पास एक ब्लड ग्रुप होगा। वो हम देखेंगे अभी, पहले सारे कॉम्बिनेशन देख रहे हैं। वी आर लुकिंग फॉर द ओके। कॉम्बिनेशन। यस, देन another combination
possible combination can be IA from one parent and small I from another parent. Okay. Then we can say IB from one parent and again IB from another parent. Then, or it can be, okay, I should change this sheet now. Then I'll come back to this again. Or it can be genotype what all have we discussed till now? We have said IA, or it can be IA from one parent, small I from another one, or IB and IB, or it can be IB or small I. And then what else? It can be IA from one parent and IB from another parent, or it can be both the small i's together. So these are the genotype. These are the genotype which that person could have. Anyone, any one possibility out of these six. Now we will see what will be the possible phenotypes with these kinds of genotypes. तो अगर बेटे जीनोटाइप ये आया होगा IA तो दोनों IA मिला के कौन सा ब्लड ग्रुप देंगे हमें ए। कैसे पता Yes, चला ma'am. कि ब्लड ग्रुप ए है? नाउ लिसन, फॉर द ब्लड ग्रुपिंग व्हाट हैपेंस इज दैट ईच ऑफ अस have RBCs. So if this is an RBC, suppose red blood corpuscles, then on the surface of on the cell membrane surface of the cell membrane of the RBC, we have certain kind of polysugars, or we can say different kinds of sugars are there. So if sugar is, suppose these round sugars I have made on the surface of RBCs. So these sugars are made by these genes. कि जो जीन्स यहाँ प्रेजेंट होंगे या जो अलील्स यहाँ प्रेजेंट होंगे they will code for some different kind of sugars, और वो sugars ये spherical form में है। जब ये sugars present हैं that means जीनोटाइप है IA क्योंकि उसी की वजह से ये पॉलीशुगर्स बन पा रहे हैं। सो अगर ब्लड के अंदर ये पॉलीशुगर्स बन रहे हैं सो आरबीसी के ऊपर भी यही सर्कुलर वाले शुगर्स होंगे, एंड दैट वुड डिसाइड कि हमारा फिनोटाइप क्या होगा। तो यानी कि हमारा ब्लड ग्रुप किसने डिसाइड किया बेटे? हमारा ब्लड ग्रुप डिसाइड हुआ जीनोटाइप की वजह से। जीनोटाइप ने कोड किया फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ शुगर्स। वो शुगर्स प्रेजेंट है ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी, ऑन द सरफेस ऑफ द आरबीसी। जिस तरह की शुगर्स होंगी उस तरह का फिनोटाइप हमारा हो जाएगा। अगेन आई रिपीट, नाउ हियर इट इज सपोज IA and small I, the next case we take. तो इसमें IA जो है it will be producing, जो IA वाला जो allele है this one, this would be producing again circular kind of sugars, but small I is not creating any kind of sugars because it is recessive. The small is recessive and this means it is not able to produce any kind of sugars. तो कोई बात नहीं, आरबीसी तो अभी भी है ना, दिस इज दी आरबीसी, और आरबीसी के सरफेस पे कौन से वाले शुगर्स आ जाएंगे अब फिर से? इट वुड बी ग्रीन स्फेरिकल शुगर्स। इज दैट राइट? Yes, ma'am. So that means phenotype will again be what? It will again be A. Phenotype would be मैम again, डिफरेंस क्या होता है ये सब जो आपने ब्लड ग्रुप में करवाया वो मुझे देखो थोड़ा देखो समझ नहीं एक आ बार, रहा। ओके वेट फर्स्ट लेट अस सी all possible phenotypes of all possible genotypes and then I'll take your doubts, right? ओके मैम। यस। तो अभी सिर्फ इतना समझने की कोशिश करो कि जो ब्लड ग्रुप है वो कोड कैसे हुआ है। हमारे अंदर जो ब्लड ग्रुप है, सपोज यू सेड योर ब्लड ग्रुप इज ए, सो ए कैसे हो सकता है कि अगर हम आपके आरबीसीज चेक करें तो आपके आरबीसीज
इन्हीं दोनों तरह के हो सकते हैं, जो कि ये एक ही तरह के हैं। देयर इज नो सच डिफरेंस कि आरबीसी है, उसके सरफेस पे ये वाले शुगर्स प्रेजेंट हैं जो कि आई ए वाले अलील ने बनाए हैं। these green वाले sugars are present. Now it depends कि मदर का ब्लड ग्रुप क्या था, फादर का ब्लड ग्रुप क्या था। अगर आपके पास कॉम्बिनेशन होगा आई ए और आई ए, द फर्स्ट कॉम्बिनेशन दिस वन, दैट मीन्स आपके मम्मा या पापा में दोनों में के पास आई ए वाला जीन इज प्रेजेंट, तभी तो आपके पास आया ये वाला जीन। और अगर सिर्फ हाँ। एक ही पेरेंट के पास IA वाला जीन प्रेजेंट होगा, दूसरे पेरेंट का ब्लड ग्रुप कुछ और है, तो आपका कॉम्बिनेशन ये होगा। दिस वुड बी योर कॉम्बिनेशन। सेकेंड वन, IA एंड स्मॉल आई। तो दैट डिपेंड्स कि पेरेंट का मैम ब्लड ग्रुप क्या स्मॉल था। आई भी कोई पेरेंट में से किसी एक से मिलेगा? यस यस यस, करेक्ट। दोनों ही हमें किसी पेरेंट से ही मिले हैं, वी कैन नॉट जनरेट इट आवरसेल्फ, है ना। ये हमारे पेरेंट्स से यस ही मैम। हमारे पास आया ना, दीज आर जीन्स बेटे, जीनोटाइप। ओके मैम। राइट। मैम तो जो आई ए है वो आरबीसी या राउंड शुगर होगा, एंड हाँ, आई में आरबीसी नहीं होगा? आरबीसी तो है बेटे, ऐसा थोड़ी ना आरबीसी नहीं है, आरबीसी तो होता है सबके पास, ब्लड में आरबीसी होते हैं, वरना ब्लड कैसे होगा, हीमोग्लोबिन तो यहीं पे है ना। मैम एक्चुअली आपने सेकंड के लिए आरबीसी नहीं लिखा ना, नहीं इसलिए नहीं, आरबीसी मुझे। है बेटा, है तो वो आरबीसी ही है, मेकिंग ऑल दी आरबीसीज हियर, राइट। ओके मैम। मैम यस। आपने उस टाइम लिखा नहीं था तो मुझे ओके। लगा कि यही अच्छा। डिफरेंस है। Okay. So now IB, the third case. Now, if I talk about IB, if some person is having this genotype IB, that means some different kinds of proteins must be produced. So I'm producing these triangular kinds of proteins. Suppose this kind of proteins are there. So on the surface of RBC, this is the RBC. On the surface of RBC, what kind of proteins would be there? It would be red triangular proteins like this. So if these kinds of proteins are present, that means that person is having blood group of B. Now you tell me, in the fourth case, what kind of sugars would be there? It is IB and small I. So what kind of sugar should I made here? Should it be spherical, triangular, or some other type? मैम इट विल बी ट्रायंगुलर। Yes, red triangular. Why? Because one IB is still producing that same kind of sugars. So मैम here it आई is प्रोड्यूस नहीं करता? small I. नहीं, small I नहीं कर पाता. Small I is recessive, एंड तो वो मैम नहीं कर स्मॉल पाता. आई से इतना फर्क भी नहीं पड़ता? नहीं पड़ता. Yes. क्यों नहीं पड़ा? Because another one is a dominant one. Here also another one यस is a मैम। dominant one. Capital IA, है ना? That is dominant. तो small I वाला recessive है, तो उससे नहीं फर्क पड़ेगा. So again, अब जो आरबीसी आएगा, वो आरबीसी कैसा आएगा? अगेन आरबीसी एंड सरफेस के ऊपर वुड बी हैविंग triangular sugars. So again, the person would be having what kind of phenotype? It would be phenotype B, right? यस मैम। Now pay attention. When it is small I, I'll discuss about this fifth case later on. First, let us see the small I. About this small I, that means neither these green circular sugars nor these red triangular sugars are produced. Means no sugars are produced because neither of the allele is a dominant, both are recessive. So no sugars will be produced. So that means on the surface of RBC, do you think any kind of sugar would be there? नो मैम। No, very good. So there will be no kind of sugar, and this RBC surface is not covered by any kind of sugars. Therefore, the phenotype of that person is zero, or we say O, because none of the type of the sugars are present on the surface of the RBC. Now, if I talk about IA and IB, in this case, IA was producing what kind of sugars? It was producing green circular sugars, right?
and IB was producing red triangular sugars. So a person who is having IA and IB genotype is producing two different kind of sugars. So on the surface of RBCs, if this is the RBC of the person having this kind of genotype, having IA and IB, would produce the sugars of both the types, and somewhere it is green circular sugars, and in some places it is red triangular sugars. So what do you think would be the phenotype of this मैम person? ए भी होगा. AB, very good. AB, that means here it is showing you the concept of codominance. Means, suppose the first case, sorry, the second case, look at this case, this one, second case. Here, capital IA is dominant. है ना? You can look here. IA is dominant because small I is always recessive. So we can say A is dominant. In the fourth case, look at the fourth case. In the fourth case, B is dominant because small I is again recessive. So B was expressed. Here A was expressed. But in the case of IA and IB, can we say that A is dominant or B is dominant? Or would we say that A, B, both are co-dominant?